जड़ की परिभाषा अगर हम करें तो जो स्वयं को न जाने, दूसरे को न जाने और जिसको कोई और जानता हो, और चेतन कहते हैं उसको जो स्वयं को जानता है, अपने से अलग दूसरे को जानता है और उसे अपना आप जानने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फूल। क्या ये फूल जानता है कि ये फूल है? नहीं। क्या ये फूल जानता है कि उसको गुरुमा ने पकड़ा है? नहीं। और ये फूल है, इसको कोई और कह रहा है कि ये फूल है। हिंदी में कहेंगे तो हम कहेंगे ये चंपा का फूल है, अंग्रेजी में कहेंगे मैग्नोलिया का फूल है। लेकिन फूल को पूछो कि तू कौन है, तो फूल के पास इंद्रिय नहीं है। फूल के पास इंद्रिय नहीं। इंद्रिय मतलब जिससे हम बाहर संसार से जुड़ते हैं, उसको हम इंद्रिय कहते हैं। जैसे नेत्र से इसका हम रंग देखा है, कान से हम शब्द सुनते हैं, नासिका से इसकी खुशबू जानते हैं, और छूते हैं तो स्पर्श से इसका कोमल कठोर हिस्सा जो है वो महसूस होता है। तो ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध दिखता है। अब इस फूल को आप रिप्लेस कर लीजिए दुनिया की तमाम चीज़ों के साथ। कुर्सी है, मेज़ है, बिल्डिंग है, पेड़ है, पौधे है, तारा नक्षत्र है, सूर्य है, चांद है, समंदर है, पर्वत है, सब कुछ है। तो जैसा ये फूल जड़, ऐसे बाकी सब जड़। अब देखते हैं इसको। ये फूल जिस हाथ ने पकड़ा, वो हाथ जड़ की चेतन। जनरल एनेस्थीसिया दे के जब किसी का सर्जरी में हाथ काट दे तो हाथ नहीं रोता और उसकी बांह नहीं रोती कि अरे मुझे काट दिया। जब होश आती है तब वो बंदा चिल्लाता है, ब्रेन एक्टिव होता है। पर ये ब्रेन बिल्कुल एक्टिव नहीं था जब वो बेहोश था। तो हम ये कह सकते हैं कि हाथ की नहीं, पूरा शरीर जड़। ऐसे ही अगर हम देखें मन, अब मन जड़ है कि चेतन, इसमें अब थोड़ा सा सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि जितनी बात मैं अभी बोल रही हूं वह आपके कान सुनते हैं पर समझता तो मन है। अब मन समझ रहा है, पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो समझने वाला मन है, ये मन भी वास्तव में जड़ है। इसमें थोड़ी एक चीज और मैं जोड़ देती हूं। हम जड़ उसको कहते हैं जो परिवर्तित होता रहे, वो जड़ है, और जो कभी नहीं परिवर्तित होता वो चेतन है। अब मन हमेशा कहाँ एक सा रहता है? मन कभी कोई चीज समझता है, कभी नहीं समझता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी खींच जाता है, कभी क्रोध में आता है। मन के रंग रोज बदलते रहते। तो जो बदल जाए, जो परिवर्तनशील होता है, उसको हम कहते जड़। तो उस नाते मन भी है। जैसे अगर हमने ये पेन उठाया, पेन जड़, हाथ जड़, पर जब इस हाथ से हमने लिखना शुरू किया तो लिखने के बावजूद भी न हाथ चेतन है, न ही पेन चेतन है। और इसी तरह जिस मन से विचार कर रहे थे वो मन भी चेतन नहीं है। आपका मन दुखी है या सुखी है, ये आप जानते हैं या आपका पड़ोसी? मन को नहीं जानता। मन मेरा कैसा है ऐसे समझो। जैसे आप किसी से पूछो, वो बड़ा मुस्कुरा रहा था, आपने उसको पूछा अरे कैसे हो तुम? वो कहते मैं ठीक हूँ। इतने थोड़ा ठीक लग नहीं रहे। बोले हाँ, अब आपसे क्या छुपाना, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, ये है ये है ये है। कहानी उसने अपनी सुना दी। लेकिन उसका मन दुखी था या नहीं था, ये उसके बताने पर मालूम हुआ।
या उसके ना बताने से आपको पता चला। अच्छा, आप एक चीज़ ये समझने की है, अक्सर कर लोगों को अपना मन कैसा है ये उन्हें नहीं मालूम होता। मन दुखी है, चिड़चिड़ा है, परेशान है, तकलीफ में है, लेकिन वो अपनी तकलीफ खुद ही नहीं समझ पाता। और जब यही तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए किसी की, तो फिर उसको साइकाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। और साइकाट्रिस्ट फिर बताता है कि भाई तेरा ना मन ठीक नहीं है, इसलिए अब तुम ये दवाई खाओ, या तुम्हारा मन डिप्रेशन में चला गया, या तुम्हारा मन एग्रेशन में चला गया, या तुम्हारा मन लिम्बो में है इस समय। तो कई बार वो इस हालत में जा सकता है कि मरीज को डॉक्टर की और डॉक्टर से दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है। अजीब सी बात है, अगर आदमी परेशान है तो अपनी परेशानी खुद ठीक कर ले, नहीं कर पाता, इसलिए मन का डॉक्टर ही अलग होता है, शरीर का डॉक्टर अलग होता है। तो चूंकि लोग अपने मन को जानते समझते नहीं, इसलिए उन्हें मन के डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और कई बार लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, हम पागल हैं कि हम मतलब जाएं किसी साइकाट्रिस्ट के पास। पर किसने कहा सिर्फ पागलों को उसकी ज़रूरत है? लोगों को चूंकि अपने मन का खुद ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जो मन को समझता है। अब हालांकि उसकी समझ वेस्टर्न अप्रोच से है और कई बार वो बहुत ठीक भी नहीं बैठती है। तो हमारे ऋषियों की जो अप्रोच थी वो अप्रोच बहुत अलग है, और मन के रोगों को भी इतना सुंदरता से उन्होंने डिफाइन कर दिया है, बहुत साइंटिफिकली डिफाइन कर दिया है। पर मन को नहीं जान पाता। मन को जानता है जो वो मन से अलग, जो मन को भी जानता है, उसी को हम शुद्ध आत्मा या मैं कहते हैं। और ये आत्मा ही चैतन्य है, मन तो जड़ है। आप ख्याल करना, मन समझिए जैसे ये बल्ब अपने आप में रोशन होता है कि बल्ब में बिजली जाए तो बिजली रोशनी देती है। बिना बिजली के तो बल्ब कांच का टुकड़ा है, तो उसका अंदर का फिलामेंट खराब हो जाए, टूट जाए, तो आप बिजली देते रहिए, बल्ब तो फ्यूज है। तो बिजली, विद्युत इस बल्ब के सिस्टम में जाती है तो रोशनी होती है। अब बिजली, विद्युत नहीं जाए तो रोशनी नहीं होती है। ऐसे ही मन वो बल्ब है जिसमें मेरी चेतना जाती है तो मन सोचता है, विचारता है, भावनाएं, इमोशंस, और मन में स्मृतियाँ, और मन में नए नए संवेदनाएं, ये सब मन में कार्य करने लग जाती है। चेतना इस मन को न मिले तो मन जैसे सुषुप्ति में, गहरी नींद में कोई कार्य नहीं कर पाता है, अविद्या में या कहो अज्ञान में लीन हो जाता है। तो मन भी जड़। अच्छा, मन की ही एक थोड़ी सी रिफाइंड फैकल्टी जो है उसी को हम बुद्धि कहते हैं। अब हमारे ऋषियों ने मन को अलग और बुद्धि को अलग किया है, चित्त को अलग और अहंकार को अलग किया है। 4 बोले उसके विभाग, माइंड and intellect, 2 different things. Subconscious and ego, 2 different things. So there are 4 faculties in the mind. It's not just one. And I challenge you, no Western psychiatry could have ever understand these 4 different functions. They'll call, there is a mind and then there is a brain. And just in last 1960s or so, with the Sigmund Freud, the thought of subconsciousness was being discussed. And that's it. And then they stopped. And then they are still into that very zone. But Patanjali talks about the faculties of mind, intelligence, subconscious, ego. 4. So you need to know all the 4, but Vedanta says these all 4 are inert, jada. And the one who is knowing through the mind, through the intellect, through the ego,
through the subconscious is the one who is the ever conscious or Chaitanya. Ever conscious Chaitanya. But mind is inert. But the association of the mind and the consciousness is so deep that we tend to see mind as me, I, which is not true. Which is not true at all. I, the pure self, is different from the mind. Mind is inert, but the self is ever conscious. Intelligence is inert, but the self is ever conscious. Ego is inert, but self is ever conscious, Chaitanya. The ego is inert, but the self is ever conscious. So until and unless you understand, now it's a very fantastic thing. You will be understanding through the intellect, and yet the intellect is inert, but the object of being known is you, which is ever conscious. That's the paradox. मन जड़, बुद्धि जड़, पर मन बुद्धि जड़ है ये समझ तो बुद्धि से ही रहे हो. बुद्धि जड़, लेकिन फिर भी तुम जड़ नहीं, तुम आत्मस्वरूप जड़ नहीं, तुम चैतन्य स्वरूप. ऐसे समझो, जैसे कमरे में अंधेरा था और कोई बाहर से आया अंदर, तो टटोलते टटोलते उसने कहा कोई है, और उस अंधेरे कमरे से आवाज आई, हाँ जी पिताजी मैं हूं. अब अंधेरे में वो दिख नहीं रहा, पर आवाज आ गई. अच्छा मान लो वो बंदा बोले ही नहीं कि मैं हूं, तो फिर वो नहीं है, क्या है? जस्ट थिंक लॉजिकली. ऐसा होता है ना, कई बार आप नींद में हो और मम्मी बुला रही उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, पर आप नाटक करते हो ना, हम तो सो रहे हैं. और माँ आती कमरे में, अरे तो सो रहे हैं, तो वो चली जाती है और आप अंदर अंदर खुश होते हो, लो बच गए. बट कई बार ना मम्मियों को धोखा देना बड़ा थोड़ा टेढ़ा काम होता है. तो एक थी थोड़ी तेज तरार माता, वो गई बाहर, लड़की को लगा मम्मी को धोखा हो गया, चलो थोड़ा और सोती हूँ. मम्मी गई अंदर बाथरूम में, बाल्टी भरी पानी की और सोती लड़की के ऊपर डाल दिया. बोले जब जाग रही है तो फिर ले नहा भी ले. फिर तो वो जाग रही है या सो रही है, वो बोले न बोले, लेकिन भीतर तो वो जानते हैं ना कि हम जाग रहे हैं. और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब कहते हैं हम सो गए. तो जब नींद हुई तो वो किसने जाना? बुद्धि तो सो गई थी, पर ये भी तुम्हें मालूम चलता है ना कि पड़े पड़े में एक टाइम पे आकर के सो गए थे हम, और फिर एक टाइम पे आके नींद खुल गई थी. तो नींद खुली, नींद आई, ये दोनों जिसने जाना, जिसने देखा, वो तो कभी सोया ही नहीं. वो तो कभी सोया ही नहीं. तो जिसने नींद का आना और नींद का जाना, सुषुप्ति का आना, सुषुप्ति का जाना, स्वप्न का आना, स्वप्न का जाना, जागृत का होना, जागृत का जाना, जिसने जाना ये सब, वही चैतन्य. उसके अलावा सब जड़. As simple as that. One is known, one is the knower. The knower is the ever conscious and the known is jada, inert. When you say, I haven't understood this, Gurumaa, so this means you are looking into the intelligence and seeing whether you got it or not. So the one who is looking into the intellect is not the intellect, is separate from the intellect. And intellect got it or not got it is witnessed by me, the ever conscious, ever truthful existence. So inert is what? The one who doesn't know that it exists, doesn't know who else exists, and needs someone to know it. Right?
And the Chaitanya, or the ever-conscious, can be very well defined as the one who knows I am. I know I am, and if I ask you, how do you know that you are? What would be your answer? You might say, well, my intellect is saying that I exist. But this intellect is not functional in the deep sleep, and yet you know I am. Now sleep has come, now deep sleep has come, now my sleep is gone, now I have woken up totally, now I am half asleep, now I am fully awake. The one who is knowing these differences of consciousness is the ever-observant witness. The witness is the ever-conscious Chaitanya, Sanskrit word. Satya, the eternal, and Asanga, meaning always aloof. See, now the light is falling on my clothes. But if I rub my cloth, will the light be rubbed? If I pour a glass of water on my cloth, will the light get wet? And if I take a scissor and cut this into piece of two, would the light get cut? So you are in original that light on whom the death cannot strike, because death can only strike at the body. No pain or misery can reach you, because that can reach only up to mind and not to you. You are the ever awakened light of the light, Chaitanya, the witness, the observer. If I say witness in Hindi or Sanskrit, it becomes Sakshi. So the Sakshi is the Chaitanya. And other than the Sakshi, whatever it is Jada, is inert. But when you see the body-mind as me, then diseases of the mind and body are inflicted on you. What I am speaking is very, 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 very subtle, and it takes a long time after listening and contemplating to finally break through. Okay, now I get it. It's not tough, it's not difficult, it's only that your reflection and understanding has to reach at a point where it's a bingo, okay, now I get it. And that's a very liberating moment. When you will see the mind as you, then all the fickleness and shallowness and diseases and emotional trauma of the mind will be inflicted on you. Yeah? But if you see yourself as the witness, as the observer of the mind, then all the diseases of the mind will stay in the mind but will not implicate you. Let's say, again I bring you back to the cloth. If the cloth is torn, I can throw it away and get a new one. Right? But if I get too... oh, I love this. Sometimes people, they gift me something, and while gifting, they're saying, it's so expensive, Gurumaa. It's so special. I went to so-and-so place, and this is something which is very unique, and it's so expensive and so wonderful. And I can see the difficulty with which they are parting it away, giving it to me. And I really feel like, don't give it to me. Don't give it. Keep it with yourself. The possessiveness or the obsessiveness which one creates with like money or things. I'll just give you one story. Long ago, almost 22 years ago, a very rich man came to this ashram. This ashram was just like an open field at that time. The Bodhisattva building was still like half done, but sometimes I used to stay here
It was dead of the night. We never had this kind of electricity. We never had some gensets. And pitch dark, lot of snakes, scorpions, everything is here. So I have lived amongst the snakes. You open up the shoe rack and the cobra is sitting there. And sometimes it is right in your bedroom. And in the dead of the night, we always switch on the light first or switch on the battery, the torch battery, and look, okay, floor is clear. No Shivagana. Okay, now you can go to bathroom. So a rich man, a Gujarati rich man, came to me from Mumbai. And we were sitting outside in the garden and he says to me, Gurumaa, what do you think? How much money would you need to construct a satsang hall over here? The Bodhi Sambudh hall was not ready. I said, maybe, it's just a rough idea, so maybe 50 lakh rupees. I'm saying 22 years ago. And he said, not a problem. I'll give you the money. Just get it constructed. I said, okay. And so for the next 1 hour, he was like talking about it and talking about himself and this and that and glorifying himself that he had, built up so many temples and dharmshala and this and that. Okay. Now 22 years gone, I'm still waiting for that money. 22 years gone. After that, I might have gone 20 times at least to Mumbai. I never saw face of that person again. And he took 1.5 hours sitting with me and boasting. And I was pretty gullible. I was little, Naya Guruji, na. I was not trained to be one. I'm just a new one. I was a naive Guruji at that time. So I believed whatever he said. And I said to Hari Milan, Hari, don't have to worry. This one person has come. He'll be giving all the money. We can make a satsang hall. Our old people will be so happy. And he said, okay, even he was excited. And then nothing happened. How come he was so proud and he was actually a rich person. But how come he couldn't do anything? Because it's difficult to let go. It's very, very difficult to let go. It's mine, it's mine, it's mine. When I'll die, I'll take it all with me on my chest. It's mine. We do the same thing with our mind. We see this mind as me. So the identification is very strong. Hence, the diseases of the mind have become diseases of you. But you are actually like the light who can't be made wet, can't be cut, can't be spoiled, pure, unattached. That is who you are in your reality, Chaitanya, the ever-conscious being. Not the body, not the mind. But the association and the obsession with the mind, with the body is so strong that we see ourselves not as Chaitanya, ever conscious, but we see ourselves as Jada Sharir.